फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप ट्रेडिंग अच्छा चल रहा है। चलना ही चाहिए। अगर आप मेरे कमोडिटी वीडियोस देख रहे हैं, क्या शॉर्ट गया है गोल्ड सिल्वर। बाद में क्रूड ऑयल में भी अच्छा ब्रेक आया एंड नेचुरल गैस वी डिड ब्यूटिफुली ऑन द अपसाइड। रैदर दूसरे काउंटर्स जो जहां पे मूव हुए थे, रैदर द कॉपर एल्यूमिनियम जिंक वेयर वी आर लाइट, आई वाज लाइट ऑन द पोजीशन, तो वो जो सेल ऑफ है दैट आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट। So यहाँ पे let's this aluminium zinc I'll still consider to be range. Copper was definitely better. बट ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉट अबाउट द कमोडिटीज। हम लोग थोड़ा ग्लोबल मार्केट को देखने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट मतलब ग्लोबल इक्विटी मार्केट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ग्लोबल इक्विटी मार्केट को देखने वाले हैं, थोड़ा टेक्निकल साइड ऑफ द पिक्चर। और इस ये देखने के लिए आई एम गोइंग टू इस्तेमाल करने जा रहा हूं मैं अपना फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप। सो एक बार चलते हैं, चलिए। एच डी रेनबो वेव एसेट मास्टर एंड एच डी आर एस आई एक्स। सो इन द एसेट मास्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंडिकेटर्स आपको दिख रहा है, इट विल यू हैव टू गो टू इनवाइट ओनली एच डी रेनबो वेव V1, तब जाके इफ यू हैव, अगर ये मेरा पर्सनलाइज्ड इंडिकेटर है, अगर आपको एक्सेस दिया गया देन यू विल गेट इट हियर। सो एसपीजीएम और ग्लोबल स्टॉक मार्केट का पिक्चर इज ओवरऑल बुलिश। मैं इसको सेटअप को थोड़ा चेंज कर रहा हूं इंडेक्स में। एंड इंडेक्स में जाते नीचे जाने वाला हूं मैं। नीचे जाके एसएनपी डाउ, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट नैस्डैक का एनडीएक्स। आई एम नेक्स्ट गोना सिलेक्ट यूरो स्टॉक्स, जो यूरोपियन ब्लू चिप इंडेक्स मान सकते हैं। देन मैं चॉइस करने वाला हूँ यूरो स्टॉक्स के बाद ऑब्वियसली यूके का स्टॉक हम लोग देखना चाहेंगे, विच इज लंदन। आफ्टर दैट वी विल आल्सो लाइक टू लुक एट इटली का स्टॉक एमआईबी हम लोग देखना चाहेंगे। स्पेन का आईबेक्स। एंड देन विल कम टू एशिया। एशिया में हम लोग देखने वाले हैं, सॉरी बिफोर दैट जर्मन डैक्स को भी देखना होगा। And then we'll come to Nikkei. We'll go to Nifty 500. After that, we'll go to China. And the stock index, which is quite strong in Asia, has been Singapore. So, isko hum we changed it. So, पूरा नीचे का टेबल अगर देख नहीं पा रहे हैं, I can make it bigger. So ये S&P, Dow, Nasdaq, Eurostox, लंदन। सो ओवरऑल वीकनेस कहां दिख रहा है और स्ट्रेंथ कहां? स्ट्रेंथ इज S&P, Dow, Nasdaq, मतलब यूएस का स्टॉक्स एंड सिंगापुर एंड जर्मन स्टॉक्स कमिंग बैक। बट वीकनेस है ओवरऑल यूरोप, लंदन। वीकनेस है इंडिया निफ्टी 500, वीकनेस है निकेई। So ये सब एरिया पॉकेट ऑफ ग्लोबल पॉकेट इज वेयर द वीकनेस इज स्टिल परसिस्टिंग कंटिन्यू। और ऐसा इट्स नॉट अ फुल स्केल बुल मार्केट जो हम दिख रहे हैं करंटली। इट इज मोर स्पेसिफिक कंपार्टमेंटल की इस एरिया इज बुल। दैट मीन्स ये स्टॉक्स में भी रिफ्लेक्ट करने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल आउट बुल स्टॉक। So let me bring the analytical table and I want to switch off this strength table for now. And SPGM, though overall it's showing ki bullishness since this buy signal. Let me save this. ये जो बाई सिग्नल है, इससे तो जब से ये सिग्नल के बाद इट हैज गॉन अप लार्जली ट्रम्प का इलेक्शन एंड ये एसपीजीएम गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय moreover US ka move. And let's look at emerging markets. Emerging market is clearly under pressure. Not great. Nifty down, China down, and emerging market के ऊपर add-on pressure बना रहा है dollar index. Dollar index steadily going strong and becoming stronger and stronger is having a pressure on emerging market and add-on bearish factor.
So once again, we'll go back. अब पहले हम लोग चालू करेंगे एशिया से। एशिया में सिचुएशन क्या है, हम लोग देखे थे कि इंडेक्स विच इज डूइंग ओवरऑल की ठीक लग रहा था कि कम बैक के वाइज ऑस्ट्रेलिया, बट द कम बैक इज फेलिंग। ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया, यू कैन सी फ्रॉम द कैंडल, एंड ये व्हाइट क्रॉस आउटसाइड द कैंडल बॉडी होके बता रहा था द प्रॉब्लम, एंड इट इज नॉट सस्टेनिंग। लेट्स लुक एट न्यूजीलैंड डॉलर। आपको सिमिलर ओवरऑल एक रेंजिश पिक्चर दिख रहा है। वो आरएसआई स्ट्रक्चर, ये देखिए ग्रीन बैकग्राउंड यानी शॉर्ट ट्रेंड बुलिश, और कैंडल स्टिक फुल रेड मतलब प्राइस एक्शन इज बियरिश। सो इट्स अ फुल्ली मिक्स मार्केट। 36% प्रोबेबिलिटी कि कंसोलिडेट होगा। बाई ट्रेड का जीतने का प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा है, बिकॉज लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टिल बुलिश, शॉर्ट टर्म ट्रेंड हैज कम बैक, बट ओवरऑल अगर पिक्चर देखा जाए द वे द कैंडल इज, इट्स अ वेरी वेरी मिक्स मार्केट। नेक्स्ट जिसको हम लोग देख रहे हैं उसका नाम है जापान। जापान का निकेई। निकेई बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, वन ऑफ द डेवलप्ड मार्केट का इंडेक्स। आज नहीं, काफी टाइम से इट हैज बीन इन दिस रेंज। ये रहा, ये टॉप ऑफ द माउंटेन टॉप, वही रेंज में ये होवर करते जा रहा है। नथिंग मच इज हैपनिंग विथ रिगार्ड टू जापान। सो ओवरऑल अगेन सिमिलर पिक्चर ही दिख रहा है जो मैं बता रहा था कि इट्स नॉट एन आउटराइट बुलिश पिक्चर। इनफैक्ट साउथ कोरिया, साउथ कोरिया इज स्टेडीली फॉलिंग लोअर। साउथ कोरिया का मूव, इट हैज सिग्निफिकेंट टू लूज आउट इफ एडिशनल tariff is put, but साउथ कोरिया का स्टॉक्स आर सिग्निफिकेंटली गोइंग डाउन। इसको देख रहे हैं चाइना। इट्स इन अ कंसोलिडेटिंग बैकग्राउंड, ग्रीन येलो मींस न्यूट्रल, कंसोलिडेशन होने का चांस। लेट मी इंक्रीज द टेबल साइज। सो कंसोलिडेशन होने का चांस इज अराउंड 64%। तो ये जो चाइना है, मतलब एक स्टिमुलस, चाइना का स्टिमुलस काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इट्स मिक्स्ड, इट्स नॉट क्लियर। इफ इट कैन सक्सेसफुल कि यहां से बाइंग, ये देखिए बेस है, अगर बेस से कम बैक कर पा रहा है देन चाइना इज वेरी पॉजिटिव। आई प्रेफर टू लॉन्ग चाइना इन दैट केस, बट करंटली इट्स वेरी मिक्स्ड। साथ में ट्रम्प टैरिफ थ्रेट इज देयर, सो चाइना कुड बी स्ट्रगलिंग नाउ फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। Then we are looking at Hong Kong. Under pressure around that base area, ये जो ऑरेंज लाइन का फ्लैट एरिया है, ये एरिया मेरे सेटअप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। सो हियर इट इज कमिंग लोअर and not a good vibe, not having a great time here with the Hong Kong. Rather the stock index which has been very strong is the Singapore. आज थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, लग रहा है its mood is not good overall stocks का in Asia, and यहाँ पे Singapore is very have been performed very well. So लग रहा है कि ट्रम्प का इलेक्शन से along with यूएस स्टॉक के साथ एस्टिमोमो गोल्ड का बेरिश हो रहा है। मतलब ये जो हम लोग एग्जिट किए हैं गोल्ड का, वो फिर से एंट्री करना पड़ेगा, बट वो एंट्री करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड ओनली आफ्टर द कैंडल क्लोज। एंड कैंडल मेरा क्लोज होता है अराउंड 10:45, सो नो हरी नो वरी। So here is Vietnam index, and not good country. I loved it when I visited there. It's लवली कंट्री, बट अभी स्टॉक मार्केट वाइज बिल्कुल ही अच्छा नहीं दिख रहा है, नॉट ग्रेट। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अपना इंडेक्स यानी सीएनएक्स 500 को, निफ्टी 500 को देख रहे हैं। क्या लग रहा है निफ्टी 500 वही बियरिश रेंज, सेल सिग्नल प्रिवेलेंट, आज फिर से आ रहा है सेल सिग्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल कई चीज देखना होगा, ये सेल सिग्नल वैलिड होगा तभी जब कैंडल क्लोज हो। कंसोलिडेशन होने का चांस 57%। जब तक सेल सिग्नल है बट शॉर्ट टर्म मोमेंटम बुलिश है, हम लोग एंटर नहीं कर सकते। सो द बियरिश प्रेशर इज ऑन
इसमें कोई डाउट नहीं है, वी कैन गो फॉर बिगर डिक्लाइन, बट आई थिंक मार्केट एक रेंज इसमें आपको ट्रैप कर सकता है. इट मे बी अ बुल कम बैक, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. So it can be a trap. So more confidence जब मिलेगा, then only we'll be able to decide. Like if the price will be breaking, say below this 22,500, then it will be a more stronger signal. Yes, it is going bad. So overall Nifty 500 में bearish अभी buy करने का कोई, this is not a time that जिसमें आप ज्यादा buy करना चाहोगे. ये देख रहे हैं इस BSE सेंसेक्स का डेटा देख रहे हैं, थोड़ा आई थिंक स्लाइटली डिलेड है ये. और हम लोग निफ्टी का ही डेटा डायरेक्ट देख सकते हैं निफ्टी के लिए इंडिया में. सो निफ्टी का देखने से जो निफ्टी सेंसेक्स इज मोर ऑफ अ सिमिलर पिक्चर. सो निफ्टी, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन. निफ्टी डेली चार्ट बियरिश प्रेशर इंटैक्ट, शॉर्ट टर्म मोमेंटम बुलिश. 125 मिनट चार्ट में let's look at what's happening in 125 minutes. And this candle is going to close at 11:05. So unless there will be no trade unless 11:05. So it's a fight going on. ST Momo bullish. This was a re-entry first signal that the sell means it is best कि यहाँ पे जो लो बनाया है, इस लो के नीचे अगर हम लोग सेल करेंगे क्रॉसिंग डाउन, देन ओनली ये सही होगा. एक मैसेज डालना होगा, कंसीडर सेलिंग निफ्टी जब ये लो के नीचे तोड़ेगा. एंड टू फाइन ट्यून ये जो अलर्ट्स है, अलर्ट्स एट द राइट प्लेस पे डालना पड़ेगा. ये रहा लो, तो थोड़ा मार्जिनली लोअर. तो ओवरऑल पिक्चर जो इंडिया, कभी भी ये कैंडल के साथ सिर्फ ये स्पाइक देखने के लिए मैं काम करता हूं, अदरवाइज कैंडल स्टिक का कोई इस्तेमाल है नहीं. लार्जली लाइन चार्ट इज गुड, बट कैंडल स्टिक इसके ये चार्ट के ऊपर लगाने से द रिजल्ट्स टर्न आउट टू बी बैड. सो निफ्टी में मुझे इट्स मोर ऑफ अ रेंजिश, मुझे रेंज दिख रहा है rather than, बट ये जो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है इन फ्यूचर, इसके ऊपर मैं नजर रखूंगा. शॉर्ट ट्रेंड भले ही भी बुलिश हो और टर्न कर रहा है, बट विद अ रेड कैंडल वी कांट बाय. सो निफ्टी इज नॉट रेडी फॉर बाइंग इवन इन 125 मिनट्स. तो अब एशिया देखने के बाद, एशिया देखना हो गया, हम लोग क्या करेंगे, विल गो टू यूरोप. यूरोप में क्या चल रहा है? यूरोप लास्ट बार जो हम लोग डिस्कस किए थे, यूरोप हैज नॉट बीन बुलिश. एक्चुअली यूरोप में काफी डाउनसाइड प्रेशर है. ये देखिए, दिस इज नेदरलैंड्स मूविंग इन अ रेंज, बट बियरिश प्रेशर है एंड फर्दर ड्रॉप पॉसिबिलिटी. सो नेदरलैंड्स नॉट बुलिश. सिमिलर पिक्चर इटली. आई डोंट थिंक यूरोप जो है is at all taken a boost from the Trump election. Trump election में European leaders were very critical of Trump. Plus, the way tariffs they are going to handle it is not going to be a positive in terms of tariffs for the Europes. And many leaders in Europe technically having bad relationship with Donald Trump, the next president of the United States. Though a country, the country के बीच में is not like personal affair नहीं, it's long term, but sometimes yeah, leaders' feelings get in between. So Trump has been, so European leaders are not pretty in the same page, number one, and secondly, they do not have a good relationship with Donald J. Trump. So here we have CAC 40, that is France. Similar, it's in a bearish range. एकदम ये जो लेटेस्ट आप दिख रहा है बुल मार्केट, मुझे ब्यूटीफुल बुल मार्केट मिला, बट दैट यूएस. Look at some of the stock, Tesla, Zoom, lots and lots of the Wells Fargo that we have highlighted had gone awesome. Look at Germany.
trying to make a comeback, but a mixed market. ऐसे मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं, बुलिश मार्केट में अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढते हैं. दिस इज यूरो स्टॉक 600. यूरोप का सबसे कंसिडर कैन बी लिक्विड बड़ा इंडेक्स. इट्स इन अ रेंज एंड यूरो स्टॉक 600 दिखा रहा है. प्रोबेबली यूरोप में ज्यादा सेल ऑफ इमीडिएटली नहीं होगा बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है. बट एक रिस्क बढ़ते जा रहा है दैट देयर इज अ स्लैंटिंग लाइन. जो स्लैंटिंग मतलब ऐसे करके जो लाइन है, स्लैंटिंग लाइन ये मेरे सेटअप में, एंड दीज आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज फ्लैट लाइन्स. So price can escape from here. In such a case, we can see much bigger decline. So Euro stock Asia may, except for Singapore, I'm not seeing that bullishness even in our Nifty 500. So if you can't invest in Singapore, though you can with the right money as a Singapore as a whole, not individual stocks, but Singapore में आप invest कर सकते हैं. Remaining in India. The stock market that has been bullish is marginal correction today. That's okay. This is the S&P 500. Broadly, it has been the most bullish. Abhi bhi not out of the woods, but it's okay because Trump bhi abhi tak aaya nahi hai and the president is still president elect. So abhi bhi time hai unko president banne mein. So Dow not after the initial jump correcting or not immediately going bullish, that's okay. That's not कोई problem ही नहीं इसमें. So मुझे overall world में very specific pockets में bullish thickness दिख रहा है. In the main index, obviously Bahrain, Qatar, lot of stocks index are there, but it's basically US stocks who are strong. In Asia, Singapore. Some of the Europeans are trying to make a comeback, but nowhere nearby. आसपास नहीं है. So overall, the picture is not very bullish. Definitely bullish for US stocks or S&P 500. इतना important stock है, important index है कि as long as S&P 500 जब तक strong है, other markets का major crash is not going to happen. तो even though we are in a recessionary cycle, ये मैं बार बार बोल चुका है, we are not far away from the vantage point. But S&P 500, I also said last time, is the toughest one to break, will be the last one to break to the downside. And when it does, it's going to be pretty bad. But as long as S&P जब तक ऊपर जा रहा है, S&P 500, बाकी index, अगर even if there is bearish, even if say recession, they will find difficulty कि नीचे जाना. So they may do in a range just like what Nifty is doing. इस जगह पे निफ्टी का सबसे बड़ा रिस्क है कि अगर for any reason risk comes back in the market and towards S&P and S&P falls sharply, Nifty could having a much bigger decline. Nifty and Indian stock. So here this is the risk master overall. एक market risk दिखाता है on the top four and India risk as well. It is in decline. So हम लोग last time देखे थे. It may not be as bad as it seems so. So थोड़ा तो risk तो बढ़ रहा है. Risk is going up. Volatility risk is rising. Just a moment. I'll have to apply it on S&P 500 to see it properly. As well as the Nifty के ऊपर भी. तो drawdown marginally. India specific risk meter is on the rise in 125 minutes. But daily chart में I think they are calm. और इसके लिए इसको इंडिया के ऊपर, इंडिया का जो चार्ट या डेली चार्ट के हिसाब से इट्स मोर ऑफ अ काम. एंड 125 मिनट्स में भी इट इज नॉट बियरिश अक्रॉस द क्वाड्रेंट. सो 125 मिनट का चार्ट निफ्टी के ऊपर वी हैव प्लेस्ड इट. दिस इज नॉट टू बी अप्लाइड ऑन स्टॉक. रिस्क इज मार्जिनली एलिवेट है, but overall market level risk is come down. So इसका मतलब है Nifty will have bearish pressure, marginal, nothing important unless this is market level risk is also going higher.
सो ओवरऑल ये रहे स्टॉक मार्केट का पिक्चर अक्रॉस द ग्लोब. आई होप दिस डिस्कशन वाज हेल्पफुल. अगर हेल्प हुआ, डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड एज ऑलवेज, हैप्पी ट्रेडिंग.